स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है How do substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. Answer. CO2 moves in and out of the cell through the cell membrane by the process of diffusion. H2O moves in and out of the cell through the cell membrane by the process of osmosis. These substances move in and out of the cell from the region of high concentration to the region of low concentration. ठीक है, ये क्वेश्चन समझाती हूँ मैं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा सेल के अंदर आती और बाहर जाती है। वाटर सेल के अंदर जाने या सेल से बाहर आने के लिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस को फॉलो करता है। ये सब्सटेंसेस हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन को मूव करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी आप नोट कर लीजिए। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you.